So tell us here about the believers in this village here. So pastor, इस गांव में विश्वासियों के लिए बताइए कि कैसे विश्वास में है, किस तरह का विश्वास उनका है। इन लोगों का विश्वास किसी वस्तु पर नहीं, किसी चंगाई पर नहीं, किसी ऐसी बात पर नहीं, लेकिन इन लोगों को पूरा यकीन है इस बात को, इनका प्रमाण है इस बात की, ये जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि अभी आप पूछ सकते हैं इनसे, किसी से भी कभी अचानक पूछ सकते हैं, इनको पूरा यकीन है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हमारे लिए है, हम भी स्वर्ग जाएंगे। Right. So pastor is saying that that the faith of these believers is based on the suffering and death and crucifixion and resurrection of Lord Jesus Christ. They don't just believe in the things or in healing or in miracles. These may occur or may have had led them to Christ. But even if you ask any time, immediately their answer would be that my Jesus is alive and He has forgiven my sin, and now I have a new life in Christ. I believe in His word, and one day I am awaiting eagerly when Lord Jesus is going to come and take us heaven. That's good. Yeah. Our sister over here, she was saying something like that, yeah? Yeah. This is. आप बताइए क्या कह रही थी अभी आप प्रभु के। आप यीशु मसीह को क्यों मानती हैं? प्रभु यीशु मसीह की इसलिए मान्यता है कि हमारे लिए मारे गए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जीवित में वो शुरू गए, और आप अब जीवित हैं। Why I believe in Lord Jesus Christ? Because He washed my sin, and He paid a penalty on the cross. He died on the cross, and He was buried and rose again, and one day He is going to come. So I'm so happy that He forgave my sin. I have a new life. He is my Lord. हमें परमेश्वर मिल गया, हमें परमेश्वर मिल गया। इन लोगों को I found the true God. ये लोग जान रहे हैं, आज ये लोग जान रहे हैं कि जिसको मैं खोजती थी, मेरा प्रभु मुझको मिल गया। One day I was lost, now I have found the true God, the creator of this universe, and that's the happiest thing in my life. इनके साथ मिलके मुझे बहुत मजा आता, आनंद आता इनकी सेवा करने में। Yeah, and they are saying that it's really joy and honor to serve and know the Lord Jesus Christ. ये सब लोग अपना काम करते हैं, सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं, बहुतों को प्रभु में लाते हैं ये लोग। These people, they work in the field, they do the daily labor and all these things, but at the same time in the evening they go and share the gospel with others, brothers and sisters, in other community, and bring them in Lord Jesus Christ. एक खास बात है कि मैंने पास्टर भी चेंज किया यहाँ पर, तो इन लोगों का पास्टर चेंज किया नहीं, जो पास्टर की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रभु है, पास्टर तो आते जाते रहेंगे, प्रभु ये। So what he's saying that I have recently changed the pastor, the pastor who led them in Christ, because slowly he could have become their God, because he is the one who. So I've changed it. So they should not keep in faith or trust in Him. They should trust in Lord Jesus Christ. And tell me also, you said that this church here has faced a lot of persecution. सताव के बारे में बताएं कि यहाँ पर सताव इन लोगों ने किस प्रकार से सहा है। इन लोगों ने बहुत नेग्लेक्ट किया, गांव ने नेग्लेक्ट किया, फैमिली ने, परिवार वालों ने इनको हतोत्साहित किया, बाहर किया, और अपने बहुत सारे गांव में होता है कि इनके पानी ना पियो, इनके घर ना जाओ, ऐसा ना कियो, ऐसा भी इन लोगों ने बेचारों ने सहा, और आज पूरे गांव के लिए एक गवाह हैं, और सब लोग जानते हैं कि एक बड़ा झुंड है जो मसीह यीशु का एक साथ रहता है। Praise the Lord. So when they came in faith, the village people, other people, those who are not part of the church, they oppose, even they stop him from drinking water, and even some of the family members are not also Christians, so they also wanted them to bring them back in their faith, but they stood together because God did a great thing that they united the families, so they stood, and today they are witness in surrounding area that there are a group of people, those who believe in Christ and firmly stand for His name. इन सब का असर आसपास के गांव में गया, उसका परिणाम है एक गुरसा है खेरा गांव बगल में, उसका बेटा एक्सपायर हो गया, सांप ने काट लिया, और एक्सपायर होने के बाद लोगों ने उसको बहुत डेड बॉडी नहीं रखने दिया, ये किया वो किया कि नहीं प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, हट जाओ तुम लोग, मेरे प्रभु के मेरे लोग हैं। और आज जो प्रभु यीशु मसीह में 10 मास देता, सारी उपज का 10 मास देता, अभी उसने बैल बेचा तो उसने 1200 रुपया मुझे दिया, मुझे तो जिसको कफन के पैसे नहीं थे, जिसके घर चंदा से किए गए थे। So even not these so as a result of their faith,
the surrounding of the villages also came to the Lord, and nearby there is another village. One man, he came to the Lord, and even when his son died, people wanted to do his funeral in a Hindu way, but he said no. I will call my brothers and sisters from that village, and they will pray and we will bury it. And even recently, that man sold one of his ox, Yeah. and he sold in 12,000 rupees, and out of that he brought 1,200 rupees to give to the pastor for the service of the Lord. So he donated 1,200 rupees to Very person, for the poor ministry person, purpose. very He is poor very person, poor, poor but person. God. एक बार 2 रुपया दान में उसने दिया। Once there was a time once he gave 2 rupees in as a donation उनको for the मालूम है यीशु ministry. परमेश्वर But है। what I am saying, बस। pastor is saying that people not just love the Lord just for some miracle, healing and all this, but deep बस। down in their life there Hallelujah। is so बस। much love and respect for the Lord, and they are even giving out of their poverty and all these things, they're giving for the service of the Lord. ऐसा पा करके हम बहुत I am very blessed to बहुत- find these बहुत brothers and आशीष होता sisters है। in Christ. मेरा प्रभु मेरे साथ है, इन लोगों And के साथ है। I मैं can देख see रहा God हूँ, is in. अपने प्रभु को इनमें देख रहा हूँ। I can see my God in their lives, so I am very blessed because of How that. long has this church been here? यहाँ पर ये कलीसिया कितने दिन से है? 5 साल से। About 5 years. Yeah. So all these believers been converted in 5 Yeah, years. yeah, 5 years. And part of a bigger grouping in together with other villages as well Yeah. on the weekend. Yeah, on the weekend they actually once in a week they meet here, but there is another big gathering. So some of the people they go, but not everybody. Some of the people go Yeah. and join to a bigger. Yeah, that's a good thing. Oh, thank you. Thank you. मैं